सवाल है. What do you think about me? What do I think about you? I hope my mother's not watching. No, I think you're a very nice host. First of all, you're a very pretty lady. और हाँ जितना बोलूँ उतना कम है. क्या बोलूँ मैं? क्या करूँ यार? बोल दीजिए प्लीज. क्या बोलूँ? क्या करूँ यार? सबको आती नहीं. आपकी जाती है. थैंक यू. आपने अब तो मैं जा सकती हूँ शो ओवर करके. मेरा तो हो गया. बट he's been one of the most humble superstar. क्या मैं एक स्टोरी शेयर कर सकती हूँ about your dad? Please. So guys, I was in Yash Raj. I was there for dubbing और मेरा relatives ने plan कर दिया था कि मैं मुंबई छोड़ के चली रहूं. इत्तेफाकन I met Jackie Shroff sir and I told him that मेरे parents आपके कितने बड़े fan हैं and you won't believe कि उन्होंने return में क्या किया. He called my parents. He talked to them and he talked to them and that's what makes him such a big superstar. And maybe that's why Tiger is such a humble human being. Thank you so much. Thank you. Okay, so ये बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, ये सीरियस सवाल है. अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि what's your take on astrology and zodiac sign? Do you believe in all these things? Yeah, definitely. Actually, मेरे दादाजी he used to be an astrologer. और he had predicted Mr. Dhirubhai Ambani's success as a businessman. जी. Yeah. And he had predicted my father would become a superstar as well. So, basically, Mr. Lobo had contacted me, and I've always been fascinated by planetary sciences, astrology, और बहुत ही spiritual हूँ मैं in general. But yeah, I remember meeting Mr. Lobo a long time ago when we exchanged a lot of messages, and he told me that I have a very bright future, and he's also very graciously written a chapter about me in his book. So, हाँ बहुत ही शुक्रगुजार हूँ that I met him, and it's very motivating to hear such positive things. So, but everybody is talking positive about you. Thank you so much. And I mean, पहले एक बार हीरो बनती के लिए जरा noise. Come on, yaar. Thank you. Okay, so Green sir, what you have to say about Tiger Shroff, because you have written a complete chapter about him. Me? Okay. मैं दिख नहीं रहा. Okay. Fine, ठीक है. See, मैं तलाश में था एक व्यक्ति का. Okay. Who would be born in 1990. I always knew that there is this person who was born in 1990 who would be the next big superstar after the set of superstars who were born in 1981. Okay, so when I saw his date of birth, 2nd March 1990, I said, yes, I need to meet this man. Okay, I need to talk to him. So I did everything possible to contact him, and he was so nice, he was so gracious that, he gave me his birth details, so that I could actually read about him. And it's fantastic. I can tell you, this is one podium where I can announce that he is going to be, Tiger Shroff is going to be a huge superstar. Woo! There is no question about that. Yeah. Okay, so अगर आप एक book autograph कर दें, बेटा, can I have a pen? Thank you. आप लोग मुझसे आज बहुत चिढ़ रहे हो गए ना? मेरे लिए कर दीजिए. Sir, my name is Anupma. ANUPMA. PMA. I've got a heart. Oh, that's so sweet. Thank you so much. तो इस तरह आप लोगों को एकदम खुश कर देते हैं और दीवाना बना देते हैं, राइट? ओके, सो टाइगर, आप जाने से पहले कुछ बेस्ट विशेस जो आप हमारी ग्रीन स्टोन सर को देना चाहते हैं और बाकी लोगों से कहना चाहते हैं, एनीथिंग यू वांट टू से अबाउट दिस बुक. और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या आपने वो चैप्टर पढ़ा? अभी नहीं जा रहे वो, क्या आपने वो चैप्टर पढ़ा है जो आपके लिए लिखा गया है? सबसे पहले congratulations Mr. Lobo on this fantastic book that you've written.
झूठ नहीं बोलूँगा, I haven't read it yet, पर I've read my chapter. पर हाँ, I think I'm a fan of Mr. Lobo क्योंकि he's proved it time and again with his predictions. बहुत ही accurate predictions देते वो from cricket to Bollywood. I think in general he's very accurate and he's very well versed in astrology and planetary sciences. हाँ जितना बोलूँ उतना कम है उनके लिए. I think I just want to congratulate you, sir, on a fantastic step. One step ahead for you, and it's a nice day to launch your book also. I think, na planets ke hisab se. So yeah, congratulations again, and wish you all the best. ओके सो जब भी टाइगर कहते हैं कि जितना बोलो उतना कम है, तो मेरी हार्ट बीट इतनी तेज से बढ़ने लगती है. आप लोगों को सुनाई दे रही है? सारी लड़कियां थोड़ा शोर मचा यार, क्या कर रहे हो? मैं होती हूँ पागलों की तरह चला रही थी. Swaroop sir, you want to say something about Tiger and being for like he came here, he gave us his precious time. Thanks, Tiger. To begin with, okay. So I just quickly share a small anecdote about the book that maybe Greenstone was just going to mention before Tiger came in. So apart from the other facets that you know about Greenstone, who's a brilliant astrologer, he's a super brilliant salesperson. So I remember the day he pitched to me, he messaged me on Facebook asking, hey, I'm this person, I write this column, and would you give me a birth date? And I said, I think it's just some spam, and I didn't reply back. And after that, he pursued it, I sent it, he came in back with his theory on this, and it was so accurate, I sent it to our commissioning editor. And Greenstone's unique method of pitching is he'll ask you your birth date and possibly open all chapters of your life in front of you. So there's nothing else but to believe in what he's saying. Yeah. Thanks, Greenstone, for choosing us as a publisher. Tiger, wonderful of you to have come here. I think everybody's a fan here. Does anybody want to put some questions to Tiger while he's here? Okay, so. मेरे बारे में जहाँ तक मुझे याद है मेरी मम्मी ने बताया सर कि आई वुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और उसके आगे ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं. मेरे पास एक सवाल है, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है. आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, इतना सारा आपको लोगों का प्यार मिलता है, शायद थोड़ी क्रिटिसिज्म भी मिलती होगी. हाउ यू लुक सो मासूम एंड हाउ कम यू आर सो हम्बल, बिकॉज एवरीबडी वाज प्रेजिंग. इट्स सो डिफिकल्ट टू गेट अ प्रेज फ्रॉम मीडिया. I don't know. I think I owe that to my parents. बहुत ही normal upbringing दी मुझे. My father being a big star and all, he never made me feel like I was different from any other child just because he was a big star. So I think because of my parents, they've given me such a simple upbringing. I think growing up, my responsibility was to give them back. I wanted to make them proud of me. I wanted to make it on my own, and I wanted to take care of them because they took such good care of me. So I didn't want to disappoint them in public. No, बिल्कुल भी आपने डिसअपॉइंट नहीं किया. आपने तो एक ऐसी फिल्म बना दी अनबिलीवेबल, जहाँ पे हमारा हीरो इतना अच्छा डांस करता है, एक्शन करता है, रोमांस करता है. प्लीज कोशिश करो. बहुत अच्छी कोशिश है आपकी. एंड एक लास्ट क्वेश्चन अगर मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे हमारे ग्रीनस्टोन सर का सपना था ये बुक का, ऐसे बहुत लोग कुछ सपने देखते हैं लाइफ में, तो जितने लोग कुछ सपने देखते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? I think anything in life, whatever you put your mind to, अगर आप उस चीज पे मेहनत करते हो, उस चीज पे काम करते हो, if you work every day one step at a time towards your goal, I think anything is achievable. And there's no right or wrong in general. It's everybody has their choice and has their path of reaching their goal. As long as you have a goal and you're clear in your head कि मुझे ये बनना है, मुझे इनकी तरह बनना है, मुझे माइकल जैक्सन बनना है, मुझे ब्रूस ली बनना है. There's always a road there. You study the greats and you become greater. It's as simple as that. If you have a blueprint, if you have a role model, for example, मुझे याद है मुझे ऋतिक रोशन की तरह नाचना था बचपन से. So I used to always watch his film ever since I saw कहना प्यार है and that song एक पल का जीना.
I was blown away. तो I always used to study his videos. Every night सोने से पहले एक वीडियो देखता था ऋतिक रोशन जी का. और you know, then in my mind I used to dream, visualize कि मैं नाच रहा हूँ गाने में, you know, and that's how slowly his, you know, somehow I try to mimic his body language. अभी इतना अच्छा नहीं कर पाता पर कोशिश कर रहा हूँ. So I'm getting there, you know. It just takes one step at a time. Every day आपके क्राफ्ट पे प्रैक्टिस करो, या वो एक्शन हो या डांस हो या एक्टिंग हो या जो भी हो, whatever Mr. Lobo is practicing, whatever. So every day one step at a time, one brick at a time, और आखिर you'll have a wall in front of you. Wow, and he means it. He means it. टाइगर ने माइकल जैक्सन को एक वीडियो भी डेडिकेट किया था डांस का. जी हाँ, एक ट्रिब्यूट दिया था उनका बर्थडे के लिए. हाँ. So that was a super video. Thank you. और एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ. आप हमेशा से ऋतिक सर को आइडियलाइज करते हैं. आपका सवाल है आपके लिए, और सवाल ये है कि आप हमेशा कहते हैं कि वो सबसे गुड लुकिंग सुपर हीरो हैं, और अब आप सुपर हीरो बनने जा रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है? आई थिंक एक एक्सपेक्टेशन है मुझ पे, अभी एक उम्मीद है मुझे. हालांकि इफ आई थिंक अबाउट कि अभी यू नो इफ आई थिंक अबाउट क्रिश्चियन हॉल तो मेरी फट जाएगी अंदर से. बट कोशिश तो कर रहा हूँ मैं टू नॉट लेट यू नो our industry down and not let my director Remo sir down and my producer Ekta ma'am. And of course, you know, Hrithik sir has given such a beautiful film like Krish, you know, so only watching Krish inspires me and motivates me to, you know, somewhere, you know, hopefully get at least somewhere there. But, हाँ, बस हम सबकी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं. And before you guys kill me, the platform is open to you all. जी फिलहाल तो कुछ नहीं. आई थिंक ही इज क्वाइट बिजी विथ हिज HRX हीरोज. एक नया शो आ रहा है उनकी, और उनकी शूटिंग भी चल रही होगी शायद. तो आई हैवंट गॉट एनी रिस्पांस, बट या आई लेट यू नो इफ आई डू. आई एम वेटिंग. आपका पोस्टर देख के कई लोगों ने रिजेंबल किया है क्रिश को. हाँ जी बिल्कुल. सो हाउ डू यू टेक दैट? ह्यूज कॉम्प्लीमेंट. उनके लिए तो शायद कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि ऋतिक रोशन कहाँ मैं कहाँ. तो you know, it's a very flattering thing. It's a very flattering thing for me. So, but Tiger, will Flying Jet be an exception, because Bollywood में जो भी सुपर हीरो मूवी बनी है, apart Krish, Drona हो, they did not do that well on box office. जी. So will Flying Jet be an exception for you and your crew? well, all I can say is that I think you're asking the wrong person. Let's ask Mr. Lobo that. I was actually about to say that. 2016 is going to be a turning point in Tiger's life. Yo. Okay, and there are two movies which are coming in, Baghi and The Flying Jet, and you'll see that both of them will do extremely well in the box office. I can tell you that. And Flying Jet, if it is going to break many records, I wouldn't be surprised. But look, Tiger. हाँ, but Tiger, you'll be getting into Salman Khan's shoes also, because आपकी जुड़वा 2 भी आने वाली है. Correct me if I'm wrong. You know, that's a very good question here. Right now, I think it's too early to talk about anything like that. Right now, मेरे ध्यान अभी फिलहाल Flying Jet पे और बागी पे ही है. बाद में पता चलेगा, पता नहीं है. I don't know. I haven't signed anything down the line yet. These are the only two films. But you know, I'll be blessed if a film like that comes to my hand. I mean, Salman sir's, you know, very big hit film, and he's such a big superstar. So just at least being, you know, doing one of his films, that's a huge honor for me. एक के बाद एक Madhuri Dixit, but she's unfortunately, you know, yeah, she's my father's heroine. So my father will get angry. जी बहुत खुश हो गए थे. I think like any father, he was very proud. पर हाँ, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं, बहुत बिंदास आदमी है. हाँ वही. He's awesome. कोई सवाल पूछना चाहते हैं? He said कि 2016 में हमारे टाइगर जी एक साल में 2 फिल्में सर बहुत बड़ी बात है. It's going to be huge. I mean, see, okay, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो 3 खान्स जो हैं, okay, इनका जो टाइम जो है 2021 के बाद में से धीरे धीरे it's going to come down, okay, and anyway is going to do extremely well till the time, and then after that also is going to be there for decades together. Okay, that's why I said that, you know, I was waiting for someone who's born in 1990.
3 प्लैनेट है, एक प्लूटो जो प्लैनेट है जो 300 साल में एक बार अपने खुद के राशि में आता है, वो इनके कुंडली में है. एंड आई वाज वेटिंग फॉर दैट 1% टू कम. तो 300 साल में एक बार, इट इज दैट ह्यूज. आई मीन इट्स गोना हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन जनरेशंस टुगेदर. नहीं, वो हम बाद में बात करेंगे. ओके बागी अप्रैल 29 2016 रिलीज डेट है जी. हीरोइन श्रद्धा कपूर. एक एक्शन रोमांटिक स्टोरी है. और जैसा कि नाम बोलता है, प्यार में बागी हो जाना. बिल्कुल बिल्कुल. ओके हाँ जी. एनी स्पेसिफिक रोल? जी फिलहाल तो आई थिंक बोथ माई रोल्स काफ़ी डिफरेंट है. फ्लाइंग जेट और बागी में काफ़ी फर्क है दोनों में. तो आई थिंक बोथ आर वेरी चैलेंजिंग. मैं एक न्यू कमर हूँ तो अभी भी सीख रहा हूँ मैं. बढ़िया. आई थिंक ओके ओके. सो टाइगर, आप जाए उससे पहले कैन आई गेट अ हग फ्रॉम यू?